Examine the significance of fundamental duty inherent in the Constitution. Critically examine the enforceability and implementation with suitable example. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. John F. Kennedy. Fundamental duties are moral and civic obligation of Indian citizens. In enshrined in Article 59A of Indian Constitution. They are introduced by 42nd Amendment Act of 1976 based on recommendation of Swarn Singh Committee to promote patriotism, national unity and responsible citizenship. Though non-justifiable, non-legally enforceable, these duties serve as a guiding framework to balance right with responsibility, ensuring citizens' contribution to nation building and uphold the ideal of constitution. Evolution of fundamental duties in India. देखो origin कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में The Indian Constitution did not originally contain fundamental duty. Inspired by Western liberal principle, it focused on fundamental rights and directive principles. Sardar Swarn Singh Committee 1976, appointed by Indira Gandhi government during the emergency 1975 to 77, recommended the inclusion of fundamental duty to emphasize citizens' responsibility. 42nd Constitution Amendment Act of 1976 added Article 51A under Part 4A of Constitution. List 10 fundamental duties for Indian citizens. 86 Constitution Amendment Act of 2002 added 11 fundamental duty. Article 51A का subclause K to provide opportunity for education to children between 6 to 14 years of age. Judicial recognition. Court have upheld the importance of fundamental duty in cases like MC Mehta versus Union of India case of 1988 environment protection and AIMS Student Union versus AIMS 2001 legal recognition of duty. Current status. Though not directly enforceable, fundamental duty guides legislative and judicial decisions, strengthening civic responsibility in India. Significance of fundamental duty. Respect the Constitution, national flag and national anthem. 51 capital A का small a. Respect the Constitution, national flag and national anthem. Baijoy Immunal versus State of Kerala. Baijoy Immunal versus State of Citizen must respect national anthem but cannot be forced to sing it. Binjoy Immunal. ठीक है. एग्जाम्पल स्टैंडिंग फॉर नेशनल एंथम इन पब्लिक गैदरिंग. दूसरी है फॉलो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. 51A का सबक्लॉज बी. अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2002. टीचिंग फ्रीडम स्ट्रगल वैल्यूज़ इन स्कूल अपहेल्ड. अरुणा राय. ठीक है. एग्जाम्पल है सेलिब्रेटिंग नेशनल फेस्टिवल विद प्राइड. फॉलो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. अपहोल्ड सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री. आर्टिकल 51A का सबक्लॉज सी. केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962. फ्री स्पीच कैन नॉट थ्रेटन नेशनल इंटीग्रिटी. एग्जाम्पल अपोजिंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट. डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज. अपहोल्ड सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी हो गई. फिर है सर्विसेज देना. डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज. आर्टिकल 51A का सबक्लॉज डी. यहाँ है धनंजय शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995. सिटीजन मस्ट कंट्रीब्यूट टू नेशनल सिक्योरिटी. वॉलंटियरिंग फॉर डिजास्टर रिलीफ. ठीक है. अरुणा राय केदारनाथ सिंह स्टेट ऑफ बिहार 1952. ठीक है. प्रमोट हारमनी एंड ब्रदरहुड. आर्टिकल 51A का सबक्लॉज ई. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन राउंड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016 emphasized social unity. Example celebrating diverse cultural festival. Preserve India's rich cultural site. मतलब रिच हेरिटेज. पहले हारमनी और ब्रदरहुड फिर रिच हेरिटेज वाली बात आएगी. इंटेलेक्चुअल फोरम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 हेरिटेज
conservation upheld, protecting historical monument, protect and improve environment. आर्टिकल 51A का सब क्लॉज जी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, environment protection is citizens duty. For example, planting tree, reducing plastic waste, develop scientific temper and humanism. आर्टिकल 51A का सब क्लोज H, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, कोर्ट सपोर्टेड रैशनल थिंकिंग. एग्जाम्पल, प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस. आर्टिकल 51 का सब क्लॉज आई, रीडिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी 2009, वेंटलिज्म मस्ट बी पनिश्ड, सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस. एग्जाम्पल, अवॉइडिंग डैमेज टू पब्लिक एसेट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट. अब है तुम्हारा स्ट्राइक फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर. आर्टिकल 51 का सब क्लॉज जे, बलराम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990, इंडिविजुअल एक्सीलेंस बेनिफिट्स द नेशन. एग्जाम्पल, एक्सेलिंग इन एकेडमिक एंड स्पोर्ट, प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. 51A का सब क्लॉज के. 86th अमेंडमेंट 2002, मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992, एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट. एग्जाम्पल, एनरोलिंग चिल्ड्रन इन स्कूल. Enforceability of fundamental duty, critical examination. Unlike fundamental right, fundamental duty are not directly enforceable by court. However, they have been indirectly enforced in several ways. पहला है judicial interpretation and expansion. Court have linked duties with enforceable rights. For example, AIMS Students Union versus AIMS. Supreme Court ruled that fundamental duty can shape law. जुडिशियल इंटरवेंशन एंड एक्सपेंशन. ठीक है. लेजिस्लेटिव सपोर्ट, मैनी लॉ ऑप्शनलाइज ड्यूटी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, अपहोल्ड ड्यूटी टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, सपोर्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. ठीक है. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपेंशन हो गया, लेजिस्लेटिव सपोर्ट हो गया. इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मैनी duties aligned with DPSP leading to their inclusion in law and policies. For example, Right to Education Act 2009 fulfill the duty to provide education. Article 51 का सब क्लॉज के. Judicial writs and PILs. Court have used Article 51A as a guiding principle in public interest litigation. For example, Bisakha versus State of Rajasthan 1997, fundamental duties were cited while promoting guidelines on workplace harassment. Challenges in implementation, lack of direct enforcement, no legal penalties exist for violating duty unless backed by law, limited public awareness, many citizens are unaware of their constitutional duties, selective implementation, some duties like environment protection receive attention while other like promoting scientific temper remain neglected. ठीक है. Conflict with rights, some duties may seem restricted. For example, compelling respect to national anthem. Boijoy immunal case. Way forward, legal reform, making some duty legally binding such as civic responsibility in urban governance. Educational initiative including fundamental duties in school curriculum and awareness campaign. Incentivization, linking compliances with duty to government schemes, awards and benefits. Strengthening judicial interpretation, encouraging court to integrate duties more proactively in verdicts. Fundamental duties play a crucial role in national binding and social harmony, but require a better enforcement and awareness. Though not directly enforceable, they significantly influence legal interpretation and policy making. Strengthening their implementation through legal, educational and awareness measure can ensure citizens' contribution responsibly to democracy. आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट मेयर पॉइज डिक्लेरेशन बट क्लियर डायरेक्शन फॉर गाइडलाइंस ऑफ स्टेट पॉलिसी. कमेंट एंड शो हाउ फॉर दे हैड बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस. ठीक है.
Directive principles are aimed at furthering the goal of social revolution or fostering this revolution by establishing the condition necessary for its achievement. Granville Austin. Directive principle of state policy enshrined in part 4 of Indian Constitution serve as guiding principle for governance aiming to establish social and economic democracy. While they are non-justifiable, they provide a framework for policy formulation and act as a moral compass for the state. ठीक है. DSP, DPSP direct the government to implement socio-economic policy to create a equitable society. They are not mere poised declaration, but clear direction for guidance of state policy. अब हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल. एक तो सोशलिस्ट हो गया, गांधीयन हो गया और लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गया. अब इसमें दिख नहीं रहा है. अब आते हैं KT Shah referred to Indian Constitution as poised document for following reason. पहला है lofty ideals. Constitution enshrines high morals and ethical values such as justice, equality, freedom. Aspirational framework. It aimed to create a just society based on universal principle of human dignity. Critical of practical implementation. While Constitution contained noble principle, Shah believed it a real world application often falls short of achieving its intended goal. ठीक है. Emphasis on social justice. He highlighted the gap between Constitution ideals and socio-economic realities in India at the time. Moral foundation. Shah regarded the Constitution as document with a idealistic vision for nation's future. However, they are not mere poised declaration. Emphasizes that principles in Indian Constitution are not just lofty ideals but are mean to be practical and enforceable. Here is why. Implementation of directive principle in Bihar. पहला है इकोनॉमिक जस्टिस एंड लाइवलीहुड. आर्टिकल 39, 41 एंड 43. पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन बिहार. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना. ठीक है. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर फॉर ST एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन. enhancing employability through vocational training. जीविका. Bihar Rural Livelihood Project, empowering rural women through self-help group and microfinance. मनरेगा implementation, providing wage employment in rural area. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीविका दीदी हो गया, जीविका बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया और मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन. राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट. आर्टिकल 45, 46. पॉलिसीज इन बिहार. मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना, इनकरेजिंग स्कूल एनरोलमेंट एंड रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, providing financial assistance for higher education. Midday meal scheme, addressing malnutrition and improving school attendance. ठीक है. मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मिड डे मील स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स फॉर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. आर्टिकल 47. Policies and program in Bihar. Chief Minister Health Insurance Scheme provide health coverage to underprivileged families. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. ठीक है. चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो गया. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर. बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज प्रोग्राम, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी अंडर PDS. पोषण अभियान, एड्रेसिंग मॉल न्यूट्रिशन अनेमिया अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन. प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन. आर्टिकल 46 एंड 38. पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन बिहार. बिहार रिजर्वेशन पॉलिसी हो गया. ठीक है. इंश्योरिंग एडिक्वेट रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC एंड EWS इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन. प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल एंड अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन.
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, encouraging financial security and education of girls children. Bihar Mahadalit Vikas Mission focused on upliftment of Mahadalit community. Environment protection, Article 48 का A and 51 का A का क्लॉज दी. Policies and programs in Bihar. जल जीवन हरियाली अभियान, a comprehensive environment conservation initiative. Bihar Renewable Energy Policy, promoting solar and other renewable energy resources. Clean Ganga Mission, reducing pollution and promoting sustainable river management. Swachh Bharat Abhiyan implementation, ensuring sanitation and wastewater across the state. Rural development and agrarian reform, Article 38, 39 and 48. Policies and program. Bihar Agriculture Roadmap, enhancing productivity and farmer income. Kirsi Input Subsidy Scheme, providing financial aid to farmer in distress. Jal Jeevan Haryali Mission, Jal Jeevan Haryali Kirsi Yojana, promoting water conservation in agriculture. Fasal Bima Yojana, implementing crop insurance to support farmer. ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीगेरियन वो. ठीक है, तो हमने सब हेड कौन कौन से पढ़े हैं. सबसे पहला है प्रोग्राम एंड देखो इकोनॉमिक जस्टिस और रूरल एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. अच्छा, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, सबसे पहले इकोनॉमिक जस्टिस एंड लाइवलीहुड हो गई, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन. ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, रूरल एंड एग्रीरियल रिफॉर्म. हाउएवर there still are criticized on following ground: lack of justiciability. Since DPSP are not enforceable by court, their implementation often depends on political will. ठीक है, bureaucratic hurdle. Many welfare schemes suffer from inefficiency, corruption and red tapeism, delaying their impact. Okay, resource constraints. Bihar face financial limitation that hinder the full realization of DPSP. Unemployment and migration. Despite employment scheme, large-scale migration reflect gap in policy effectiveness. Environmental challenge. Implementation of environmental policy face resistance due to economic interest and weak enforcement mechanism. Conclusion. Directive principles of state policy are not mere poised declaration but have significantly shaped Bihar governance, particularly in education, employment, healthcare, social justice, environmental conservation. With 48% of its population in the age group of 0 से 18 years, Bihar stands at a crucial juncture where initiative like new education policy, skill development program, Sat Nishchay 2.0 aligned with the DPSP mandate can drive human development and restore state's historical glory in years to come.